व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेमाटोपोएसिस ए माने वर्ड टा में टॉपिक भीतर को जाइने जस्ट मु पचारचे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेमाटोपोएसिस ता माने कोन हेथो भाबुछ कि माने कहा सहित रिलेटेड थिबो एनीथिंग एनी आइडिया मैम ब्लड yes exactly the hem शब्दर अर्थ कण ए जो हमर hem शब्द अछि the word hem means it is related to blood okay so hematopoiesis means what hematopoiesis hela the process of formation of blood cells okay हमर जो blood cells अछि हमर different blood cells अछि तो से सब तयारी हबो कि हमर इम्यून सिस्टम रो जो सब सेल्स अछि all the cells will be formed the same process टा को हम कहंती कोन that process is called as hematopoiesis okay so हमें टिके डिटेल्स रे देखिया प्रोसेस टा okay so what are the different cells of immune system तो मु कहिले as I said hematopoiesis माने कोन ना it is a process in which different components or different cells of blood किमा different cells of the immune system are being formed so cells of immune system कोन कोन माने को cell हमर formation होची से सब cell हमें प्रथमे देखिबा then we shall move on to the process the detailed process of hematopoiesis okay so students what are the different cells तो देखो एठी तळे देछि बहुत सारा सेल्स जेमति कि हमर हेला प्लाज्मा सेल्स मेमोरी सेल्स हमर टी सेल देन हमर एनके सेल्स कि नेचुरल किलर सेल्स न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल मोनोसाइट मैक्रोफेजेस तो these are the different type of cells जोटा कि हमर ब्लड सेल्स किबा इम्यून सेल्स बोली हमें ताको कहंती सो ए माने स्टार्ट कोठो होंती गोटे हमर स्टेम सेल थाए ओके से जो स्टेम सेल टा कोन नेक्स्ट स्लाइड रे हम सेडम तुमको बुझेबे तो आमे जो हेमाटोपोएसिस पढुचे हेमाटोपोएसिस माने कोन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स म कहली तो हेमाटोपोएसिस रे कोन हुए ना हमर गोटे स्टेम सेल थाए से स्टेम सेल टा को हमें कहंती हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ओके सो जो स्टेम सेल टा थिबो दैट विल डिवाइड सेटा डिवाइड हे कि दी प्रकार सेल लिनिएज से प्रोड्यूस करे गोटे से प्रोड्यूस करिवो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल आउटे से प्रोड्यूस करिवो कोन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल तो जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल एथरो हमर सब लिम्फोसाइट्स उडा प्रोड्यूस हेबे जेमति कि हमर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स एवं आउट प्रोड्यूस होबो कि नेचुरल किलर सेल तो पहिले एठी जो लिम्फोसाइट्स उडा कहले बी सेल्स टी सेल हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास रे देखि सारचंती अंक विषय रे किछि देन हमें देखिबा कोन माइलोइड प्रोजेनेटर टे डिवाइड हे कि फॉर्म कोन करबा हमर जनरली व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी से फॉर्म करबो तो एठी डायग्राम रे सेटा शो करेनी बट नेक्स्ट डायग्राम रे हम सेटा देखिबा डिटेल रे तो सेथिरे हमर ग्रान्युलोसाइट जेमति कि न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल सेगुडा सब तयारी हेबे देन हमर मास्ट सेल तयारी हेबो हमर मैक्रोफेजेस तयारी हेबे डेंड्राइटिक सेल्स तयारी हेबे एंड लास्टली हमर रेड ब्लड सेल्स प्लैटिलेट से माने भी सब तयारी हेबे सो तो हमें वर्तमान देखिबा द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोएसिस so what is hematopoiesis so hematopoiesis is the production of all cellular component of blood plasma blood amar blood ro सब cellular component ro production process को हम कहते hematopoiesis एवं एटा कोठी हुए it occur inside a hematopoietic system okay hematopoietic system रे हुए hematopoietic system रे किए सब आसीबे जेमति कि हमर बोन मैरो हे गला लिवर हे गला देन स्प्लीन तो ए सब ऑर्गन इंक्लूड हेबे कोथरे हमर हेमाटोपोएसिस प्रोसेस रे and it is the process through which the body manufacture the different blood cells that we have already discussed then the most out important point asila kon amara out important point asila the so hematopoiesis ra site kon site mane kon ko jaga re se process ta hoji what is the site of hematopoiesis तो site of hematopoiesis pile दीटा स्टेज रे हमें देखिबा गोटे हला एम्ब्रियोनिक स्टेज रे कोठी प्रोडक्शन होची ब्लड सेल्स काना आउट हला हमर एडल्ट स्टेज रे
तो जनरली इन अडल्ट स्टेज हमरो बोन मैरो जोटा हमरो थाए रेड बोन मैरो से रेड बोन मैरो रे हमरो द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स किबा हेमाटोपोइसिस टेक्स प्लेस बोन मैरो कोटा जो हमरो तमे बोन देखिबा हमरो फीमर हे गला ह्यूमरस हे गला किबा रेडियो अल्ना टिबियो फिबुला जहा भी हमरो बोन्स अछि से बोन भितर एम्ति रेड कलर सब्सटेंस गोटे थाए and that red color substance is called as red bone marrow. Okay, and a red bone marrow भितरे कौन था हमर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे रेड बोन मैरो विषय मु आगरो ऑलरेडी तुमको बहुत थोड़ा कहि सारी छी तो जनरली माने इफ यू कैंट कोरिलेट करि पारु ना ताहले चिकन जेतले हम लेग पीस खांती इनसाइड दैट लेग पीस उटे रेड माने मरून कलर रेड कलर उटे सब्सटेंस थे तो सेटा को कहा जाय रेड बोन मैरो. Okay, so similarly in our bone also amo bone bhitere bi emti uta red color substance thae that substance is called as red bone marrow. And inside that bone marrow gote cell thae gote special type of cell taku kuha jaye hematopoietic stem cell. And this hematopoietic stem cell will differentiate to form different cell lineages jemti amar red blood cells he gala white blood cells he gala ebong platelets he gala. So all these different type of cells are being formed from the red bone marrow. So एटा तो होची adult रे but question is कि जो माने हमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रे माने फिटल स्टेज रे जते बेले थाए गोटे एम्ब्रियोटा ता बॉडी रे तो बोन फॉर्मेशन हे न थाए तो ता बॉडी रे हमर रेड ब्लड सेल्स कोठो आसी ब्लड फ्लो हमर हार्ट रे फॉर्मेशन हे जाय 1 मंथ रे ब्लड सर्कुलेशन हे जाय तमे चेक एम्ब्रियो करिथिला लास्ट सेमेस्टर रे तमे सेइथरे भी हमें देखि दिले तार सब वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स अछि तो now the question is तार तो बोन मैरो नाही well developed bone नाही then तार को जगह होची हेमाटोपोइसिस किबा ब्लड सेल फॉर्मेशन कोठी होची तार ब्लड सेल कोठो आसुची so the answer is yolk sac. Okay, हमर जो एम्ब्रियो थाए एम्ब्रियो रो डेवलपमेंटल बायोलॉजी तुम डेफिनेटली पढितबो yolk sac कोन गोटे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो द माने yolk sac रे जो सेल्स माने थांती से माने जनरली हमर एम्ब्रियो रो नरिशमेंट पाई तकर डेवलपमेंट पाई थांती प्लासेंटा माने फुली डेवलप होया पर्यंत एंड से yolk sac ही कंट्रोल करे कोन हेमाटोपोइसिस जेते बेले पर्यंत माने एम्ब्रियोनिक स्टेज ता प्रॉपर्ली डेवलप हेनी then after as the embryo continues to develop se jemite develop haba hematopoiesis process ta bartaman shift he jibo kotu liver mane placenta well develop he gala yolk sac ta dhire dhire reduce he jibo so now liver and spleen. Okay, liver and spleen ame padhiba pile mane cells of immune system pare ame organ of immune system padhiba and there we shall discuss about the different organs spleen he gala lymph organ he gala seguda सब discussion kariba. So हमरो जो बोन मैरो सॉरी लिवर स्प्लीन को से शिफ्ट करबो तापर ग्रेजुअली जेतले बेबी डेवलप आहुरी अधिक हबो तार बोन फॉर्मेशन हबो ओसिफिकेशन हबो तो तापर तार बोन मैरो रे हमरो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन हबो as usual then adult रे as we discussed हमरो बोन मैरो रे तार हेमाटोपोइसिस प्रोसेस ता हबो. So I hope you are clear with the site of hematopoiesis. Then आमे देखिबा about hematopoietic stem cells. Okay, so what are these hematopoietic stem cells? तो जो hematopoietic stem cells अछि hematopoietic stem cells पहिले तमे माने जानि थिबो hematopoietic stem cells विषय रे so ए जो stem cell टा हमर कोन what is the meaning of stem cells तो stem cells गुडा पहिले हैला एठी गुटे वर्ड लिखि देखा undifferentiated cells stem cell आगो बुझो तापर hematopoietic stem cells कोन म बुझेबे तो stem cells गुडा हेले पहिले undifferentiated cells undifferentiated और differentiated माने कोन ना for example suppose तमे गुटे माने अट्टा रो एग्जांपल लेबा हैला तो अट्टाडा माने तमे अट्टाडा को अट्टारे तमे चकुली बनै परिबो अट्टारे तमे ताको पूरी बनै परिबो देन रोटी बनै परिबो सम अदर माने जहा भी हमर डिशेस अछि सेउडा बनै परिबो तो एठी अट्टाडा हैला हमर स्टेम सेल. ओके स्टेम सेल माने कोन से डिफरेंशिएट हेनी बट जेतबे हमें ताको माने इंती अट्टाडा को माने डो बनै दोचे तापर से ऑब्वियसली रोटी ही हबो तापर अनेक छि हे परिबोनी तो माने से रोटी हैला माने से कोन हैला से डिफरेंशिएटेड हे गला बुझेला तो try to understand undifferentiated और differentiated ଭିତରେ difference कोन
सो सपोज मु तमर एग्जांपल देबी जेतेबेले सपोज 10th क्लास रे थिला तो 10th क्लास रे तमे जेतेबेले थिला सेतेबेले कोन होतला ना तमे गोटे डेफिनेट तमे 10th पर कोन आर्ट्स चूज करि पारथांतो साइंस चूज करि पारथांतो किबा कॉमर्स चूज करि पारथांतो बट हेमाटो माने सेही स्टेज रे तमे कोन थिला तमे सेतेबेले स्टेम सेल कंडीशन रे थिला तापरे वर्तमान कोन हैला ना तमे 10th पर 12th जेतेबेले प्लस 2 गलो प्लस 2 रे तमे साइंस नेला ओके तो साइंस रे वर्तमान तमे कोन हेला तमरो टिके माने डिफरेंशिएशन हे गला कि तमे गोटे साइंस स्ट्रीम तापर प्लस 2 परे तमे जे कोन से फिजिक्स नै परथांत केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी किछि भी आईटी किछि भी नै परथांत बट तमे पुनी चूज करले कोन जूलॉजी तो तमे पुनी आहुरी डिफरेंशिएटेड हे गला तो आई होप माने तुमको क्लियर होतबे कि डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड सेल भीतर डिफरेंस कोन सो लाइक दैट हमर जो माने जेतळे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज रे थांती हमर जो ब्लास्टुला स्टेज रे थांती ब्लास्टोसिस्ट थाए सेतिर गोटे इनर सेल मास थाए से इनर सेल मास रे जो सेल गुडा थाए से गुडा स्टेम सेल्स तो से माने जेतळे साने डिवाइड हे कि डिफरेंशिएट हुअंती डिफरेंशिएट हे कि से माने हम बॉडी रो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सब तयारी करूचंती ओके तापरे ऑर्गन तयारी करि सल्ला परे से ऑर्गन रो स्पेशलाइज्ड फंक्शन हे जाउची से डिफरेंशिएट हे जाउची तो सिमिलरली हमर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स रे भी सेया हुए हमर जो बोन अछि ओके हमर जो बोन अछि बोन भितरे जो बोन मैरो टा प्रेजेंट अछि दैट बोन मैरो कंटेन द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स माने तारो डिफरेंशिएशन हे जाईची बट माने कंप्लीट डिफरेंशिएशन हेनी माने हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स टा वर्तमान डिवाइड हे कि से अन्य ब्लड सेल से प्रोड्यूस करी पारिबो तो बुझी पाला स्टेम सेल रो अर्थ कोन So, so these hematopoietic stem cells are what? These hematopoietic stem cells are undifferentiated stem cells. These are undifferentiated stem cells, and that give rise to other blood cells. अन्य blood cells हमने formation करिवे by the process of what hematopoiesis, and it occurs in the red bone marrow. We already know. So, जो hematopoietic stem cells थाए, these hematopoietic stem cells give rise to different type of blood cells. माने से माने डिवाइड है कि दीटा अलग अलग प्रोजेनाइटर प्रोड्यूस करिवे ओके सो से दीटा प्रोजेनाइटर कोन कोन गोटे हला हमर माइलॉइड प्रोजेनाइटर आ गोटे हला हमर लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सो व्हाट इज दिस माइलॉइड एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर कोन हबो ने जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल थिबो दैट विल डिवाइड टू फॉर्म ए माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल एवं से माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल रो हमर प्रोड्यूस हो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स बैसोफिल्स यूसिनोफिल्स हमर रेड ब्लड सेल्स मेगाकैरियोसाइट किबा प्लेटलेट ए माने सब प्रोड्यूस होबे कोठ हमर माइलॉइड सेल्स रो देन हमर लिम्फोइड सेल्स जोटा अछि लिम्फोइड प्रोजेनाइटर हबो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर हमर कोन प्रोड्यूस करिवो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर मेनली हमर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करिवो जेमति हमर टी लिम्फोसाइट्स से गला बी लिम्फोसाइट्स से गला किबा एंड हमर NK cells or natural killer cells को से produce करेगा okay so these are the different hematopoietic stem cells then pile अछि different subtypes of hematopoietic stem cells so what are the different subtypes the different subtypes रे कोन कोन आसीबो हमरो जो subtype अछि subtype of HSC stands for hematopoietic stem cells so तार अलग अलग पिले सब टाइप्स अछि जहा को कि हमें कोनती CFU बोली कोनती ओके सो जो CFU रो अर्थ कोन ना CFU मींस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एटा को CFU किबा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट काहे की कोहा होछ ना जो हमर कहिले माने हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल टा डिवाइड होची कोथरे लिम्फोइड प्रोजेनाइटर एवं माइलॉइड प्रोजेनाइटर रे से माने पुणे अलग अलग कॉलोनी फॉर्मेशन करूजंती अलग अलग सेल्स रा माने एरिथ्रोसाइट्स रो कॉलोनी फॉर्मेशन कले ल्यूकोसाइट रो कॉलोनी फॉर्मेशन कले कि हमर ग्रान्युलोसाइट मानकर कॉलोनी फॉर्मेशन कले बैसोफिल कॉलोनी फॉर्मेशन कले तो से माने डिफरेंट डिफरेंट क्लोन किबा कॉलोनी प्रोड्यूस करूचंती तो सेथि पई ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स छै तार अलग अलग सब सब टाइप अछि और से सब टाइप को हम कोनती CFU किबा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोली कोनती एंड दिस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कोन कोन अछि अलग अलग टाइप रो अछि गोटा हला CFU GEMM stands for granulocyte erythrocyte monocyte megakaryocyte तो ए माने से जो लिनिएज टा प्रोड्यूस करिवे देन CFUL माने इट स्टैंड्स फॉर colony forming unit lymphocytes CFUE it stands for colony forming unit erythrocyte सेमती गोटा अछि GM stands for granulocyte and macrophages
सेमती अछि MEG MEG stands for mega karyocyte कि हमर प्लेटलेट जोड़ा तयारी हो and B CFUB it stands for basophil and CFUEOS it stands for CFU eosinophils. Okay, so these are the different type of what colony forming unit or subtype of hematopoietic stem cells. तो पहले एटा हला मेन डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ ओके मेन डायग्राम जोटा तमे ड्रॉ करबो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस माने हेमाटोपोइसिस प्रोसेस ता केमिति होची एंड एठी आउट इंपोर्टेंट जिंस भी अछि तमरा आउट सब टॉपिक अछि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ हेमाटोपोइसिस तो तार जो डिफरेंट फैक्टर अछि दिस आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस डायग्राम सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट डायग्राम ए डायग्राम रो तमे प्रैक्टिस करबो एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस you have to remember all these factor okay so factor रे हमें देखिबा कोन different factors अछि तो प्रथमे as I said जो हमर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल अछि तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जोटा HSC it is a pluripotent stem cell प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल माने कोन ना एटा बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप रो मल्टीपल टाइप रो से सेल प्रोड्यूस करि परछ माने ए गोटे सेल रो देखो ए अलग अलग केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड 10 to 12 टाइप रो डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस होची गोटे सेल रो तो दैट इज द माने सेटा ही स्टेम सेल रो अर्थ माने से जणे बहुत सारे डिफरेंट टाइप रो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करि परछ जेमति अटार एग्जांपल देली अटारो तमे बरा बनी माने मालपुआ तयारी कलो कि अटा चकुली कलो कि रुटी कलो पूरी कलो व्हाटएवर योर विश तो माने गोटे पर्टिकुलर सेल बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ सेल से प्रोड्यूस करि पारुची सेटा को ही हमें कोनते स्टेम सेल तो हमर जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल एटा हला गोटे स्पेशल टाइप रो अनडिफरेंशिएटेड सेल जोटा कि प्रोड्यूस करूची डिफरेंशिएटेड ब्लड सेल्स तो एटार कैपेसिटी कोन इट कैन सेल्फ रिन्यू माने कोन एटा डिवाइड हे परिबो एटा सेल्फ माने गोटे सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड हे कि से सेम माने गोटे हेमाटोपोइटिक सेल को मल्टीपल टाइप हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से प्रोड्यूस करि परिबो तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू सेल्फ रिन्यू ओके सो ए जो सेल्फ रनिंग सेल्स अछि एटा कोठी देखम कहले एटा बोन मैरो रो स्ट्रोमल सेल्स रिप्रेजेंट अछि हमरा बोन मैरो रे थाए वी ऑलरेडी नो so it produce two type of cells okay two type of cell lineage से produce करे गोटे हला हमर कोन lymphoid progenitor आउट हला myeloid progenitor so what is this lymphoid progenitor माने से गोटे माने डिफरेंशिएट हे अछि माने हेमाटोपोइटिक स्टेम सेलटा जोटा दिला सेटा वर्तमान डिफरेंशिएट हे गला डिफरेंशिएट हे कि से कोन प्रोड्यूस कला गोटे लिम्फोइड प्रोजेनेटर माने एटा गोटे अलगा सेल लाइन तयारी करबो एवं माइलोइड प्रोजेनेटर एटा आ गोटे सेल लाइन तयारी करबो तो आमे वर्तमान वन बाय वन देखिबा फर्स्ट देखिबा आमे लिम्फोइड प्रोजेनेटर कोतले लिम्फोइड प्रोजेनेटर आमे आगे देखिबा तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर देखो ए लाइनटा तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो अछि ये कोन प्रोड्यूस करूची एथिरे दी प्रकार रो जिंस होची गोटे हला हमर टी सेल प्रोजेनेटर एवं आ गोटे आसिला हमर के बी सेल प्रोजेनेटर ओके सो टी सेल प्रोजेनेटर कोन होची टी सेल प्रोजेनेटर माने टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करबो एवं बी सेल प्रोजेनेटर माने से बी सेल्स प्रोड्यूस करबो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करबो तो जेते बेले इंटरल्यूकिन 7 हला एठी देखो बहुत सारा फैक्टर आसीबो हला CSF GM तापर हमर IL तो जनरली दीटा हमर अछि गोटे अछि CSF आउडेला IL CSF रो अर्थ हला कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एवं IL रो अर्थ हला इंटरल्यूकिन कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आ इंटरल्यूकिन विषय आमे ऑलरेडी पढी सारी चंती कोठी ना जेते बेले म पढुथि केमिकल बैरियर्स ओके आमे इनेट इम्यूनिटी रे जेते पढुथले केमिकल बैरियर रे सब साइटोकाइन इंटरल्यूकिन कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इंटरफेरेंस सब थिला तो से जो केमिकल सिग्नल गुडा केमती एठी काम करचंती देखो तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल कोन करबो इट प्रोड्यूसेस इंटरल्यूकिन 7 तो इंटरल्यूकिन 7 प्रोड्यूस करले जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर ता थिबो दैट विल बी मॉडिफाइड इनटू बी सेल प्रोजेनेटर एंड जदी सेटा माने कोन करछि जदी से खाली सिंपली डिफरेंशिएट होछि विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकिन 7 इट विल प्रोड्यूस अ टी सेल प्रोजेनेटर okay so b cell progenitor re kon hochi b cell progenitor will again produce interleukin 4 interleukin 6 and interleukin 13
So this interleukin ए सब chemical factor कौन करिवे B cell progenitor को हमारा B lymphocyte माने फॉर्म करिवे B lymphocyte तापर वर्तमान पुणी इंटरल्यूकिन जेतळे माने हमर एंटीजन आसीबो एंटीजन आसिले से इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 13 रो इन्फ्लुएंस रे से प्लाज्मा सेल रे डिफरेंशिएट है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवो यू ऑलरेडी नो दैट देन आसला हमर कि टी सेल प्रोजेनेटर जोटा थिबो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 4 2 और 4 इन्फ्लुएंस रे से डिवाइड हवा कोथरे इनटू T helper cells and T cytotoxic T cells. Okay, and एठी देखो अलग अलग माने CD4 T cell CD8 T cells अछि सेमते CD4 CD8 कोन हम जेतरे T cells विषय पढिबा T cell differentiation जेतरे हम डिस्कशन करिबा सो इंटरल्यूकिन 2 और 4 इन्फ्लुएंस रे कोन होजी से T cell टा हमर डिफरेंशिएट होजी इनटू T helper cells and cytotoxic T cells. Then आमे आसीबा सेकंड टाइप हमर माइलोइड प्रोजेनेटर तो एदरे देखो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जति इंटरल्यूकिन 3 गला ताहले से कोन होची इंटरल्यूकिन 3 रो प्रेजेंस रे से लिम्फोइड प्रोजेनेटर हैला आउ अदरवाइज से कोन होबा दैट विल फॉर्म ए माइलोइड प्रोजेनेटर एंड दिस माइलोइड प्रोजेनेटर कोन करिवो ए माइलोइड प्रोजेनेटर टा माने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हमरो डिफरेंट फैक्टर जेमिति कि फॉर एग्जांपल GM-CSF GM माने कोन ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 3 एवं आउडे इंपोर्टेंट हार्मोन एठी असला एरिथ्रोपोएटिन हम एरिथ्रोपोएसिस पढिबा या परे माने रेड ब्लड सेल केमति प्रोड्यूस होची तो सेठी माने एरिथ्रोपोएटिन ता हमर किडनी रो प्रोड्यूस हुए एंड दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर से कोन प्रोड्यूस करबो एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर प्रोड्यूस करबो एंड दिस एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर विल फॉर्म द एरिथ्रोसाइट किंबा RBC रेड ब्लड सेल then amara myeloid progenitor jodi interleukin 3 interleukin 6 and GM-CSF like asibo tahale that will form kona form kariba se granulocyte monocyte progenitor and again GM-CSF au MCSF mane kona monocyte the monocyte colony stimulating factor the A factor under se produce karibo neutrophil and monocyte and a mono mane eta कोन हबो डिफरेंशिएट कि मैक्रोफेज प्रोड्यूस करिवो जोटा कि हमर गोटे फैगोसाइटिक सेल देन हमर आसला कि देन हमर आसीबो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GM-CSF एंड इंटरल्यूकिन 3 हमर इओसिनोफिल प्रोजेनेटर हबो दैट विल फॉर्म इओसिनोफिल सेमिति under the influence of interleukin 3 and GM-CSF it will form the basophil progenitor and it will form the basophil then एठी आसला एठी देखा आउट इंपोर्टेंट जिंस आसला इंटरल्यूकिन 3 इंटरल्यूकिन 6 एवं GM-CSF ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एवं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन अंडर रे कोन हबा हमर गोटे मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस हबा ए जो लार्ज सेल टा देखु छ एटा को कहै छै मेगा कैरियोसाइट एवं ए मेगा कैरियोसाइट ता हमर एरिथ्रोपोएटिन GM-CSF इंटरल्यूकिन 3 इंटरल्यूकिन 6 यार इन्फ्लुएंस रे से प्रोड्यूस करबो स्मॉल प्लैटेलेट्स एवं ए प्लैटेलेट माने कोन करिवे दिस प्लैटेलेट्स विल हेल्प इन द ब्लड कोआगुलेशन ओके सो क्लियर हे गला पेले तो एठी देखला तम माने कोन हमर केमिति प्रोड्यूस होची डिफरेंट लिम्फोसाइट्स एठी हम देखिले रेड ब्लड सेल केमिति प्रोड्यूस होचे एंड हियर वी शो कोन द माने व्हाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट एगुडा सब तो व्हाइट ब्लड सेल्स ना न्यूट्रोफिल मोनोसाइट बासोफिल एगुडा सब व्हाइट ब्लड सेल्स तो व्हाइट ब्लड सेल्स केमिति प्रोड्यूस होची हम देखिले सो एठी हमको माने कोन कोन जानिया को मिलला फर्स्ट हम जानिले कि हेमाटोपोइसिस कोन देन हम देखिले व्हाट एथरे माने दीटा जिंस माने बहुत सारा जिंस हम जानिले हेमाटोपोइसिस प्रोसेस एंड द डिफरेंट फैक्टर ऑफ हेमाटोपोइसिस हम देखिले देन आउट गोटे इंपोर्टेंट जिंस भी देखिले व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम जोटा कि हमर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करिबा डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम तांगर फंक्शन कोन कोन से सेल गुडा कोन करंती ऑल दिस थिंग्स वी शैल डिस्कस सो ए जो सेल्स अछि ये जो सेल्स अच्छी तो ये माने कोन करंते माने जस्ट रीड इट आउट proliferation and differentiation of various hematopoietic stem cells by different cytokines bone marrow stromal cell are the major source of cytokines which
active macrophages and T helper cells to induce hematopoietic activity, resulting in rapid expansion of population of different blood cells. So ये जो process टा हमें सब discussion कले कि माने केमिति सब different factor गुड़ा केमिति माने हमारे colony stimulating factor ही गला कि interleukins ही गला different interleukin हम different factor केमिति induce करूँचंदी the production of different cells. Okay.